then we'll start. करे? Ready to roll? ठीक है. चलो जी. Okay guys, so beds up please. Let's settle down. So formal good morning, and we are starting with our fifth session for fundamentals of management paper. And in today's topic, we are covering two things, two important topics which we'll be looking at, which is organizing and managing the organization. This would be from the unit 3 of your syllabus, and today's class should end the unit 3 topics that we have. Okay, so we are continuing from where we were in the previous class, where we had been talking about planning. If you, those of you who were there in the class previously, you may recollect that we were talking about planning and we were talking about strategies and the organization, basically the basics of how a company works, survives and grows. And that was where we were in the previous class, and we are continuing from that and going into the topic of organizing. Now the question in an organization, now when we use the word organization, what are we basically meaning? So an organization is basically, like we've discussed previously, a group of people working together to achieve a common goal. Yahan tak to we are all clear. But the problem with the organization part is that it needs structure. It needs to have a defined hierarchy. It needs to have reporting structure. It needs to have authority. मैं तो पहले ही कह रहा हूँ बेटा, आप लोग आगे आ जाओ. I can't shout today. I'm having a throat ache, so please come in front. Those of you who can't hear me at the back, please come and sit here. There's plenty of space here, right? Okay. So when we talk of organization, what is it that an organization manages? So जब हम organizing की बात कर रहे हैं, what are we organizing? When we have this topic organizing, what are we organizing? What does organizing cover? The first thing that organizing will cover is this linkage between, so the first thing that organizing is going to do is, just give me a second to clean this up, is number one is when we are achieving a goal, we have to divide the tasks. Who does what? So if I am an FMCG company, let me take a running example today. Let's take Colgate as a running example. हम Colgate को ही reuse करेंगे बाद में. So if I am a company like Colgate, what am I making? I am making toothpaste. ठीक है? अब वो toothpaste के parts में there are lots of things that happen behind you as a customer opening a packet of toothpaste and consuming the product. ठीक है ना? So you have supply chain, you have marketing, you have manufacturing, you have the guys who are making the packaging, you are the guys who are running the retail center, you are the guys, they are guys who are doing the marketing efforts. हाँ जी, warehousing है, logistics है, आपका distribution network है, सब कुछ है. Who does what? अब if I am a marketing guy, can I be told go manufacture? I don't have the skills for it, I don't have the capability, I don't have the knowledge. So I have to divide who does what. Otherwise, if I tell you 4 people, let's say I take these 4 people, toothpaste banani hai, you will do 5-6 tasks, you will do 5-6 tasks, each of you end up doing 5-6 tasks, but there will be overlaps. जो आपके लिए important है वो शायद आपके लिए नहीं है, जो इनके लिए important है वो इनके लिए नहीं है. What is happening to the organization? There is chaos, there is no direction, and I am not able to achieve my goals. मेरा ये प्रिंसिपल है. दिस इज द थिंग. एक कोई ऐसे होता है ना, थोड़ा सा मेलोड्रामेटिक हिंदी मूवी, आई एम लिविंग फॉर दिस पर्सन, ये वो है. दिस इज माई मेलोड्रामेटिक गोल. Are you getting my point? To be honest, so in order to do that, organizing does is that it divides the tasks. अब डिवीजन के बाद नेक्स्ट चीज क्या आती है? मैंने टास्क तो असाइन कर दी, उसके बाद क्या आता है? नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा? असाइनिंग के बाद नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा? ध्यान से सोचो, उसको सोचो. अगर मैंने आपको एक काम दिया, उससे नेक्स्ट चीज क्या आती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी. हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? ठीक है ना? डिवीजन के बाद आएगा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर आएगा आपका, अब मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर दी, उसके बाद क्या आएगा? इशू.
मेरा बॉस कौन है? Why is that important? Why is that question important? Who is my boss? Who am I reporting to? Who is supervising me? Who am I accountable to? Who is directing me? Think of the boss. I call the boss. Think of the boss like a GPS on your phone. Google Maps on your phone. Google Maps क्या करता है? और थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको बोलते हैं ना इधर लेफ्ट टर्न करना है. अच्छा इतनी देर बाद आपको ये लैंडमार्क देखा उसके बाद राइट टर्न करना है. इट्स टेलिंग यू दैट्स द बॉस. दैट्स द रोल ऑफ द बॉस. ठीक है ना. सो यू नीड समबडी हु विल supervise you while you are accomplishing the tasks which have been assigned to you, and therefore you are able to achieve my goals. My goals are a subset of the organization's goals. So if I am a territory manager for North Delhi या Delhi, जो मेरा sales का goal है, if I merge all the major cities, it goes up to the top, and that is Colgate's goal. मुझे इतनी सेल्स करनी है, एंड द गोल इज डिवाइडेड अमंग्स डिफरेंट टेरिटरीज इन अ प्रोपोर्शनल मैनर. वो हम अभी टास्क असाइनेशन पे हम अभी नहीं जा रहे. वी विल कवर दैट प्रोबेबली इन यूनिट 4 व्हेन वी टॉक ऑफ अप्रेजल्स एंड थिंग्स लाइक दैट. वो तब काम आएगा हमारा. वी विल रिविजिट दिस टर्मिनोलॉजी देन आई एम. और सबसे नेक्स्ट चीज, अब इन सारों के बाद एज अ कंपनी व्हाट डू आई नीड? coordination. अब I give you one example for coordination, जो मेरा अपना example था एक बार, which I have seen. You are aware of this product called Pepsi का एक product है नींबूज मसाला सोडा. ने सुना होगा ये ब्रांड, राइट? 7 Up का मसाला सोडा. उसमें problem what I observed, this is my personal observation, I could be wrong, but I stay in North Delhi. It's an area called Shalimar Bagh. I don't know if you are familiar with North Delhi. Shalimar Bagh is sort of reasonably sized area. It's not a small place, but it's not a big area. Also reasonably sized. ये this is I am talking when Nimbu's masala soda was just being released. ये उसकी बात है. So the marketing guys. So when you launch a new product, back end पे आपका पहले R&D हो रहा है. आप कस्टमर सर्वे ले रहे हो कि कस्टमर्स को. So if you've had the normal Nimbu's, it is very sweet. It is supposed to be Nimbu Pani, but Nimbu Pani isn't supposed to be that sweet. It has been created with that, whatever, right or wrong. So they got customer feedback that your product is very sweet and we are not liking it. So they did R&D. They created Nimbu's masala soda, which is a more masala face, less sugary, less sweet alternative. Fine. So that is the R&D guys that did it. The product development guys, sorry, in this case it would be the product development guys did it. The marketing guys received customer feedback and we've started working on it, right? अब इनके केस में क्या हुआ? What I observed was the ad started running. Ad आ गई. As a customer टीवी पे मैंने ads देखनी शुरू कर दी. Somebody did the product mixing of advertising. ये आप लोग जब marketing करेंगे, आप लोगों का इस sem में marketing तो नहीं है ना? In sem 1 you don't have a marketing paper? Yes, no, lazy bums. हमेशा हर क्लास में मुझे यही सुनवाना पड़ता है आप लोगों को. So if you don't have marketing, you will come to that perspective there कि कौन-कौन क्या-क्या करता है. So उसमें क्या हुआ? The ad started running. अब मैंने ad देखी as a customer, how am I going to react to that? I may ignore, I may buy the product. So मैंने ad देखी, मैंने अपने एरिया में 1 महीना ads मैंने देखी, दिख रही थी मुझे. They were running it for 1 month, and that entire month मुझे पूरे अपने एरिया में एक बॉटल नहीं मिली प्रोडक्ट की, क्योंकि there was a mismatch between the distribution guys, the manufacturing guys, and the marketing guys, which is why I need coordination. नहीं तो क्या होगा? Ad आ गई, कस्टमर ने ad देखी, ad वालों ने तो अपना काम कर दिया, मैंने ad देख ली, everybody is happy. But if I am going to react to that ad and the product isn't there on the shelf, उनका पैसा वेस्ट हो गया ना. जब तक प्रोडक्ट आएगा तब तक, do you think I'll stay around? क्योंकि what is this a product which I want? Is it a car which I want where I am willing to wait? Let's say, is it a Mahindra XUV जिसके लिए दो साल की वेटिंग है? I am willing to wait for that product, but will I wait for a bottle of cold drink? Definitely not. So FMCG में क्या होता है? FMCG में मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की कोऑर्डिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि द प्रोडक्ट इज बीइंग पुश टू यू एज अ कस्टमर थ्रू एडवर्टाइजिंग. अगर आपने उस टाइम उसको कैप्चर नहीं किया, द कस्टमर विल नॉट कम बैक. आपको एडवर्टाइजिंग का भी पैसा वेस्ट हो जाएगा, बिकॉज द कस्टमर विल गो अवे. सो दैट इज द प्रॉब्लम वेयर coordination becomes a necessary thing.
एंड व्हाट इट डज इज कोऑर्डिनेशन के बाद आएगा आपका रिसोर्स एलोकेशन। आपका मार्केटिंग बजट कितना है, आपका सेल्स प्रमोशन का बजट कितना है, रिटेलर को कितना डिस्काउंट ऑफर करना है, प्रमोशन मटेरियल कितना बनवाना है, ये सारी चीजें will be part of your resource allocation, and this is what organizing does. ये organizing के basics है. These are all the tasks that organizing is going to cover. अब उसके बाद आएगा हमारा part what is the issues. आपने जैसे कहा भाई इसी को कर लेते हैं, हम टास्क पे ही रहते हैं अभी. I'll just finish this off in a moment. Okay. Now when I define the tasks for Colgate, okay, versus let's take an educational institution, मेरी टास्क क्या है? Who will define my task? I am part of this organization. I am a person delivering the lecture. I am marketing SOL to you. I am the face of SOL to you. Right? Now, what is my task? So, is it broad? मेरा क्या job role होगा? सोचो इसमें. So, यहाँ पे आता है organizing, and the principles of organizing that we are going to follow are dependent upon the organization and the product that is being discussed. So if I am if I am a FMCG company, I have focused job roles. But when I am, say for example, an academician, my roles are more broad, right? Because I am doing multiple things simultaneously, though they may be part of academics only. Each requires its own time and effort and activity. So मेरी job description थोड़ी सी broad based है. But अगर मैं एक let's assume I am Maruti, I manufacture cars or assemble cars, whatever you want to call it. So उसमें क्या होता है that every assembly operation, the person stays there, the car keeps moving. अगर आपने assembly operations देखिए, मैं वहीं खड़ा हूँ, कार आती है, मैं अपना पार्ट करता हूँ उसमें और वो कार अपने आप आगे चली जाती है. So let's say I am a guy who installs tires on the car. So मेरे पास गाड़ी आई, उसमें मैंने 4 टायर, मुझे पता है कौन सा मॉडल लगाना है उसमें, मैंने 4 टायर उठाए, लगाए, बोल्ट किया उनको और गाड़ी अपने आप आगे चली गई. मैं वही चीज आई एम बोल्टिंग टायर्स ओनली. बट व्हेन आई एम इन academics, I am doing taking classes, I am writing papers, I am doing course evaluation, I am doing assessment कर रहा हूँ मैं आप लोगों की, मैं प्रेपरेशन कर रहा हूँ क्लास की. मेरी जॉब क्या हो गई, बहुत ब्रॉड हो गई. वहां पे फोकस इज एसेंशियल, बट यहाँ पे फोकस इज नॉट एसेंशियल, यहाँ पे ब्रॉड बेसिंग इज एसेंशियल. सो अनदर एग्जांपल वुड बी इन द कंसल्टिंग डोमेन. यहाँ पे भी आपको बहुत सारी जॉब्स मिलेंगी विच विल बी ब्रॉड बेस्ड इन नेचर. नाउ द क्वेश्चन कम्स इज हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज. ये हम आज डिस्कस करेंगे. हाउ डू वी मैनेज दिस scenario and make the organization run effectively. Now when we look at organization hierarchy, अब बनेगी इसके बाद we have hierarchy. Okay, now what is the आपने वर्ड सुना हुआ है ना hierarchy. What does term hierarchy mean? Standard definition होगी आपकी hierarchy की. So let's say marketing, HR, R&D. For example, मैं ऐसी I am just drawing a very rough chart. This is not accurate, please वो मत करना इसको. Then you have product lines. So let's say there is toothpaste, for example, there is X and Y, तीन चीजें, and it goes down and down and down, ऐसे करके चलता है. This is your traditional top down hierarchical structure. आप इसके diagrams आपको बहुत सारे मिल जाएंगे. Diagram is obviously just a idea, just to give you an idea. Now I have an organization which is, this is called top down. मतलब the CEO will tell the head of marketing. The CEO is never going to interact with the frontline employees. ABCDE से ये कभी भी interact नहीं कर रहा है. That is the structure of a top down system. Now in a top down system, discipline becomes very important. Communication channels become very important because
For him to communicate with him, the communication has to go through multiple. Think of it like आपको अब metro में जाना है. What would you prefer? Switching 2 or 3 metro lines, or taking one line which might be longer but you'll have to sit in that one particular line and stay there. Which one would you prefer? So let's say you are going, again I'll go back to my old example. You want to go from Gurgaon to गुड़गांव एम्बियंस मॉल. मेरे को बड़ी अच्छी लगती है और मैं जब से आप लोगों को कह रहा हूँ मैं तब से एक बार भी नहीं जा पाया, राइट. एंड आई हैव टू गो टू शालीमार बाग वाया मेट्रो. अब मेरे पास 2 ऑप्शन है. आई कैन टेक पिंक लाइन, आई कैन टेक येलो लाइन, गुड़गांव टू आजादपुर, आजादपुर से आई कैन टेक एट ई रिक्शा, एवरीबडी इज हैप्पी. और आई कैन गेट डाउन एट आई थिंक INA, switch over to pink line and then come to from the pink line to Shalimar Bagh directly. Again take an e-rickshaw to go home. Now, the more steps are there, what happens? It adds on to complexity. So मुझे ध्यान रखना है, मुझे INA पे उतरना है. I cannot go to sleep क्योंकि अगर मैं येलो लाइन में सो जाऊं मैं आराम से 1 घंटा सो सकता हूँ. It takes 1 hour from सिकंदरपुर to Azadpur. I can easily sleep. If I get a sleeping space, I can easily sleep. वो येलो लाइन में if is a very big if. I don't know those of you travel. मुझे आज तक येलो लाइन में सीटिंग नहीं मिली unless मैं रात को एक बार 10 बजे आया था तो मुझे मिली थी. That's all. अच्छा मेरे को नहीं मिलती, मेरे साथ उसका एक्सपीरियंस गड़बड़ है. पिंक में मिल जाती है आराम से. My point is let's ignore the metro वाला part. The analogy is that if I am going in one single approach, it is always easier. Chances of disturbance, chances of clashes, chances of delays are less. But the more metro lines I change, it adds on to my complexity, and therefore that complexity adds time, it adds difficulty, and it may have an impact on my achieving my goals wala part. So I want a communication between these lines to be perfect, top down. Then there is another method which is called bottom up. इसके साथ रिलेशन आएगा आपका टॉपिक कॉल्ड मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स. ये हम अप्रेजल्स में डिस्कस करेंगे. MBO. MBO मींस मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव. मतलब लेट मी पुट दैट इन पर्सपेक्टिव. अब आपके पास एक कंपनी है, आपको उसमें एक महीने में 100 यूनिट्स ऑफ टूथपेस्ट बेचनी है. दैट्स योर टास्क. यू आर पर्सन ए, यू हैव टू सेल 100 यूनिट्स ऑफ टूथपेस्ट. सीईओ ने बोला है कि आपको 100 यूनिट बेचने हैं. आपको कम्युनिकेट हो गया, ठीक है. दैट इज ऑप्शन 1. एंड दे से कि आपको रोज 9 o'clock आना है ऑफिस और 5:30 तक बैठना है. Versus a bottom up approach is basically where I have more flexibility, and second it's the employees that drive the goals of the organization. So आप लोगों ने ये टर्म सुनी होगी कभी, that an organization has been bought out by its employees. It is called a management buyout. Management buyout में क्या होता है? The employees typically become shareholders, and जो CEO का रोल होता है वो in the top down structure वो रोल थोड़ा सा shrink हो जाता है, and you as employees are self motivated to deliver, and you tell कि organization क्या करेगी क्योंकि आप उस कंपनी में शेयर होल्डर्स हैं. If the company performs better, you get not only your salary, you also get your share price also goes up. The company's performance increases. Everybody is happy. So that is where the bottom up approach comes. Another is a company which has very limited levels of hierarchy. So you have CEO, A, B, C. That's it. This is called a flat structure. क्योंकि जितने आपके यहाँ पे रिपोर्टिंग बॉसेस बढ़ते जाएंगे, ठीक है, उतना आपका क्या होता जाएगा? यू आर एडिंग extra management employees, extra supervisors, assistant manager, assistant deputy manager, area manager 1, area manager, assistant area manager. अब जितने designations add करते जाओगे उतना you add on to your HR cost. The lesser number of people are there in the hierarchy, it is cheaper to run it. Number 1. Number 2, अगर अब CEO को employee A से बात करनी है, there are step 1, step 2, there are minimum 2 extra steps in between. More time consuming, more loss. अब सीईओ ने मार्केटिंग वालों को बोला आपको 100 यूनिट बनाने हैं,
या 100 यूनिट सेल करने, उसने बोला नहीं यार हमें ना 100 यूनिट टूथपेस्ट के नहीं यार, हम 50 टूथपेस्ट और 50 टूथब्रश कर देंगे, देयर इज लॉस, इंफॉर्मेशन गलत होती जाती है। जितने लोगों को आप, लेट्स टेक वन थिंग, आप एक काम करना, कभी एक्सपेरिमेंट करना, घर में 3-4 लोगों को लेना, एक स्टेटमेंट एक के कान में बोलना, चाइनीज विस्पर, अभी आपने शायद बचपन में एक गेम खेली होगी, टेल इट टू 4 पीपल। हाँ जी, डिस्टॉर्ट हो जाएगी, डिस्टॉर्शन, यू आर एब्सोल्युटली, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। जितने स्टेजेस होंगे बीच में उतना डिस्टॉर्शन होगा। डिस्टॉर्शन मींस द रॉन्ग इंफॉर्मेशन और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन गेट्स ट्रांसमिटेड, और अगर मुझे गलत इंफॉर्मेशन मिली है तो मैं क्या करूंगा, I will do a wrong action, and wrong action will not link me to my goal of achieving the organization's goal. Problem समझ में आ गई, कम कहां पे है इश्यू अब इसमें, ठीक है। Then comes the question of centralize or decentralize, ठीक है। So now for example, any of you studied in, say for example, the केंद्रीय विद्यालय, कोई है केवी का बच्चा? सो केवी के क्वेश्चन पेपर्स आपके स्कूल में बनते हैं कि केवी संगठन से बन के आते हैं? संगठन से आते हैं ना। सो दैट इज वेयर कम्स द टर्म सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन वुड बी एवरी कॉलेज, in our case for example the university sets the exam paper, in your case also the university will set it, teaching anybody might do, the syllabus the university decides। अब वो जो syllabus आपका है वही सेम सिलेबस मेरे कॉलेज के बच्चों का, एग्जैक्टली सेम, BMS is exactly the same. Who decides the syllabus? The university. But who teaches the syllabus? Different colleges, which is where you have college A who is supposed to be better than college B. Say for example, people fighting to get into say a BCom honors degree in say SRCC versus another BCom honors degree in say कोई ऑफ कैंपस कॉलेज ले लो, लेट्स से वी टेक कलिंदी कॉलेज ले लो, गर्ल्स वाला ले लो, कलिंदी ले लो फॉर एग्जांपल, या मैत्री ले लो फॉर एग्जांपल, गुड कॉलेजेस है तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का ही पार्ट, बट व्हाई आर पीपल मैड आफ्टर गेटिंग इनटू SRCC? फॉर व्हाटएवर रीजन, द पॉइंट इज, वो रीजन दे आर मैड बिकॉज ऑफ अ वैरायटी ऑफ रीजन, ब्रांड, प्लेसमेंट, कैंपस लाइफ, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे रीजंस है। द क्वेश्चन इज दैट व्हेन दैट डिग्री कम्स, the degree doesn't say आपने किस कॉलेज से किया, the degree is centralized. Say CBSE, you study in thousands of schools across the country, but the paper is made by CBSE themselves. That is a centralized system. A decentralized system would be every college has their own syllabus and teaches in their own way. Now, depending on the organization, so if I am the Indian Army, decentralized or centralized? Centralized, because that's essential. But if I am Accenture and I'm a consulting company, centralized, decentralized? Decentralized. You're absolutely right, because it depends on the type of business being performed. If I'm Indian Railways, it has to be centralized by default. But if I am Maruti Suzuki, I may नहीं, Maruti नहीं, गलत एग्जाम्पल हो जाएगा, but if I am an education institution, decentralization would actually give me better quality or better control over the education process. हाँ जी, you were adding something बेटा? Airlines में भी centralization जरूरी है, क्योंकि railways और airlines में सबसे बड़ी problem क्या है? You have to get all the planes and trains to work together. Let's take a thumb rule. In whichever business you need, resource allocation has to be shared, you would prefer a centralized system. But where you have enough resources to go around, you would prefer a decentralized system, because that's how the allocation works. Because if one airport, let's say we have 5 airports in our company, under our company, we are flying to 5 airports, and every airport runs a different schedule. That means I will have to have 5 planes. But अगर मैं coordination करता हूँ, I may manage with only 3 planes. एक उड़ा, एक से गया A to B, B to C, C to D, D to E, E to F, या E to A. Every block is sharing the plane, which reduces my resource needs.
सो सेंट्रलाइजेशन में आपका रिसोर्स नीड्स कम हो जाती है एंड बेटर कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस. डिसेंट्रलाइज में क्या है, यू आर प्राइमरीली गोइंग ऑन गोल. सो हर यूनिट को, हर एम्प्लॉय को एक गोल दे दिया, आपको इतना काम करना है. अब आप, नाउ यू टेल मी एज एन एम्प्लॉय, विच वन वुड यू प्रेफर? 100 units of sales but coming to office 9 to 5 5 days a week, or 100 units of sales on the 30th of the month? क्या बेटर रहेगा? क्वेश्चन आपके पास है, एज एन एम्प्लॉय यू आर टोल्ड टू सेल 100 टूथपेस्ट. ये आपका सेल्स सेल्स का गोल कह लो, सेल्स नंबर कह लो, सेल्स फिगर कह लो, तो ये आपका टास्क है. ठीक है. अब आपके पास ऑप्शन है दो. ऑप्शन वन इज 5 days a week you come to office, 9 to 5:30 आप ऑफिस में बैठे हुए हैं और टोटल करके आपने 4-5 हफ्ते में आपने 100 टूथपेस्ट बेच दिए. ऑप्शन टू इज दैट यू आर टोल्ड टू सेल 100 टूथपेस्ट बाय द 30th of the month. अब आप चाहे 29 तारीख को सारे बेचो, चाहे आप पहली को सारे बेच के बैठ जाओ, चाहे आप रोज के 3 बेचो. विच वन वुड यू प्रेफर? सेकेंड वाला. But from an organizational perspective, chances are sometimes people will like, नहीं यार मेरा एम्प्लॉय मस्ती कर रहा है, let me control, let me see कि वो क्या कर रहा है. So the moment controlling and directing principles come in, centralization becomes preferable. But if I am, say for example, I am the Indian Army, मेरे पास एक incident होता है, let's say somewhere along the line of control there is some intrusion from the Pakistan side of the border, for example. होती रहती है, nothing wrong, I'm not blaming, I'm not getting into the politics of it. अब उस ऑफिसर ने, जो वहां का इंचार्ज है, उसने उस टेररिस्ट को पकड़ा और उसको वहां पे गोली मार दी. दूसरा है, उसने उसको पकड़ा, उसने उसको 2 घंटे मुर्गा बनाया, वापस भेज दिया. तीसरे ने पकड़ा, उसने उसको लोकल पुलिस को हैंड ओवर कर दिया. चौथे ने पकड़ा, उसने उसको 2 चाटे लगाए और बोला भाग जा. अब इज दैट हाउ an organization with the size and complexity and importance of tasks like the Indian Army going to operate? Can they afford to have decentralization? Because everybody is acting independently, it may or may not meet with the goals of the organization. So independence देना employees को, empowerment देना, decentralization करना is always preferable. But in order to do that, lots of effort needs to be made by the company to ensure that the employees are going in the right direction. You cannot have 4 different answers to the same scenario. That is going to create confusion and that is eventually going to create chaos. Okay, our job is organizing, is avoiding chaos, ensuring that every part of my business runs smoothly. Okay, I am not saying anything. वो वहाँ पे सो रहे हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ. Okay, now comes types of organizations. So if only my son would sleep like that, मेरी आवाज सुने और सो जाए, if only that was possible. Right. Okay. So coming back to our thing. So now we have types of organization. अब एक है इंडियन आर्मी, इंडियन रेलवे हमने डिस्कस कर लिया. एक हो गई आपकी एमएनसी. कोई एक एमएनसी ले लो. लेट्स से वी टेक, क्या लेना है, कोलगेट ले लो. अगेन स्टिकिंग बैक विद आवर कोलगेट, पामोलिव ले लो आप एमएनसी. सुजुकी ले लो, टोयोटा ले लो, कोई ले लो. देन यू हैव अ कंपनी लाइक से पतंजलि विच इज डोमेस्टिक इन नेचर, लोकल कंपनी है. ठीक है. So you can divide the companies according to the business parameters that they are running, international or local. You can divide them on SBUs. So Colgate Palmolive has one division which sells toothpaste. There is one division which sells soaps. There is one division which sells hand wash, for example. So I can divide them on product categories. I can divide them on Colgate India Limited, Colgate Sri Lanka Limited, Colgate China Limited. I could divide them on countries. I could divide them on Colgate emerging markets. Accenture does that. They've got this emerging markets theme. वो इनके employees are trained to
run or solve business problems related to emerging markets like India, China, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Philippines. In सब की problem similar. So they you can club it according to that. Some companies may club on customers, so high end customers. So you have ICICI में एक होता था पहले, पता नहीं अब है कि नहीं, privilege banking. Privilege banking is basically for customers whose net worth with ICICI is more than 10 lakh rupees. FDs, बैंक अकाउंट्स मिला के उनका 10 लाख से ऊपर है, दे गेट स्पेशल सर्विसेज. आप लोगों ने नहीं कभी देखा ये इंडिगो में होता है प्रीमियर सर्विसेज. प्रीमियर सर्विसेज आपको एक्स्ट्रा दो तो यू गेट, एयरटेल देता है फॉर एग्जांपल प्रायोरिटी कॉल सेंटर. तो अगर आप एयरटेल ब्लैक कस्टमर हो, आपका अलग कॉल सेंटर नंबर है विच इज गोइंग टू टेक योर कॉल फास्टर. प्रिविलेज सर्विसेज, एक्स्ट्रा सर्विसेज जो आपको दे रहे हैं. आई कुड डिवाइड कस्टमर्स ऑन देयर value or their business or their potential or their economic status. So one company may say I'm going to sell only to HNI customers, high net individuals across the world. So I will divide my business accordingly. Some may divide on products, some may divide on economic status, which we have covered, and some may divide on functions like a standard top-down approach, marketing, HR, operations, finance, supply chain, distribution, जो हमने पहले डिस्कस किया था. ठीक है. Then so when I design the organization, should I have a central or a local or a state level or a national level or an MNC, or I have a organization which is divided on product lines or divided on departments? There are certain factors. So one of the factors is size of the company. Now if I am a small company, I can be more flexible. I will take a lean approach. Remember मैंने यहाँ पे बनाया CEO, employee ABC. That's a lean, flat structure. Not too many reporting bosses. So, for example, if we take a college, for example, you have the principal, you have the head of the department, and you have teachers. Flat. But if I take an organization like the Indian Army, they'll have 20 designation between the top guy and the bottom guy. So वो उनकी necessity है, ये यहाँ की necessity. Let's not get into it. But the point is, the size of the organization will determine the design of the organization. जितनी बड़ी होती जाएगी, जितनी complex होती जाएगी organization, उतना you will see movement towards a centralized system. क्योंकि centralization के बिना आप उसको accommodate नहीं कर सकते उस growth को. नहीं तो वो growth फैल जाएगी. Again, it will be chaos. Right? So size हो गया, type of product हो गया, type of growth. Now there are certain companies which grow so let's do one. So you have organic growth and you have inorganic growth. Any idea what is organic growth? Organic, inorganic, क्या हम रेफर करेंगे to a corporate perspective? हाँ जी, जीरो था is organic. How would we define it? Organic का definition ये हुआ कि the company is growing on its own capabilities. धीरे धीरे करके they are building size, they are growing in size, they are being bigger, they are doing more business, they are selling more, they are generating more revenue. धीरे धीरे करके. In some cases, like say for example Google grows through the process of acquisitions. So take for example Google जो अभी where this is happening, YouTube. Was YouTube an original Google product? No, it was a third-party product, another company whom Google bought out and integrated it into the Google ID. So आपका जो Google ID है वो हर जगह चलता है. But YouTube was not Google's original product. So in Google's case, for example, if I don't know their organization structure, I'm extrapolating and contemplating that data. The point is that Google, the way let's say Gmail runs and the way YouTube runs could be different क्योंकि दोनों अलग-अलग organizations हैं. For example, so in one organization now, centralization may not work. So I will have to run the organization in the form of a strategic business unit which is semi-independent. It's an autonomous college. So say for example you go to a college like say BITS Pilani.
बिट्स का नाम सुना है, बिट्स पिलानी, एवरीबॉडी heard of it. It's a sort of an semi-independent autonomous institution in the sense कि it is complying with UGC norms, but it is not reporting to any university. जैसे अब SOL है, it is complying with both UGC norms and DU norms also. They are obviously similar to each other, but there are two different norms which I need to comply to. अगर मैं autonomous हूँ, so BITS Pilani can be different from IIT Delhi in the way they run their course, but eventually they are all under the UGC umbrella, जो हमारा parent body है सबके लिए. All education institutions, higher education institutions, their parent body is the UGC. That is fine. वहां तक हमारा decide हो गया. तो उससे क्या होता है कि the more I grow through acquisitions, instead of having one Google, I will now have. So that determines my structure. क्योंकि हर कंपनी की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, and you cannot kill the identity of the person while you've done it. So let's take another simplistic example. You have a marriage. Two people come and live together. It's traditionally in India, for example, culturally it's expected that the wife will take on the surname of the husband. That's typically expected, right or wrong. So social policy में नहीं जाने. But when that lady takes up the name of the husband, does that mean her past and her history and her family have been wiped away? No, she has her own knowledge and then she merges and matches with the husband's organization, in this case the family. ठीक है ना? So वो यहाँ पे the more I grow with organic growth, inorganic growth से grow करूंगा, I will end up having a decentralized system. But if I am growing in my own size, I may end up having a straight top down या bottom up hierarchical organization structure. ठीक है? With me so far? यहाँ तक you are there? Okay. Now, as a customer, you are an outsider. As a customer, how do you see the structure of the organization? Can you, when you meet an organization or you interact with its officers or you interact with its office, can you tell कि organization का structure कैसे है? Can you predict that? You can. As an outsider, you can. And one example you would see is a call center. A call center is typically a top-down approach. So जब भी आप call center में किसी employee को call करेंगे, apart from the, let's say you are calling somebody at a bank, ठीक है? आपने उसको बोला मेरा क्रेडिट कार्ड का बैलेंस कितना है, मेरी चेक बुक नहीं आई, आपने जो भी क्वेश्चन पूछना आपने उससे पूछ लिया. अब फॉर एग्जांपल आपकी क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट लेट हो गई है, इट्स द बैंक्स फॉल्ट एंड द चार्जेस हैव बीन डेबिटेड टू योर अकाउंट, क्योंकि आपको स्टेटमेंट लेट पहुंची तो आपने लेट बिल पेमेंट किया. ठीक है, ये होता है, सबके साथ होता है. लेट बिल पेमेंट के लिए आपने कॉल सेंटर कॉल किया, माय बिल हैज बीन लेट, तो कहता है यस सर आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, हाउएवर लेट मी पास योर कॉल टू माय सुपरवाइजर, जो आपका वेवर देंगे, मैं नहीं कर सकता. कई ऑर्गेनाइजेशन में होता है, मेरे को याद है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा उसका, मेरे को उनसे कंप्लेंट नंबर जनरेट करवाना था, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं था, मुझे उस टाइम बहुत गुस्सा आ रहा था उन पे, मुझे याद नहीं कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, इतने होते हैं कि भूल गया. बट आई डू रिमेंबर दैट कॉल सेंटर गाय, द फ्रंटलाइन टेलीफोन ऑपरेटर, ही कुड जनरेट अ, ही या शी थी मुझे याद भी नहीं, दे कुड जनरेट अ कंप्लेंट नंबर. So they had to pass my call to the supervisor who had the authority or the right to generate my complaint number. Top down हो गया ना. Top down में क्या होता है, मेरे rights defined होते हैं, मेरा अपना बॉक्स होता है, मैं इससे ज्यादा और इससे कम काम नहीं कर सकता, और ज्यादा is the one that we are concerned with. What is my limit? So let's say today I want to give you marks for internal assessment. ठीक है, मेरे को यूनिवर्सिटी कहता है मेरे पास 25 मार्क्स है. ठीक है, मैं कहता हूँ नहीं यार, मेरे को तो क्लास पार्टिसिपेंट चाहिए, मुझे केस स्टडीज करवाने क्लास में, मैं अपनी क्लास में 50 मार्क्स दूंगा इंटरनल्स के. कैन आई डू दैट? इट इज बियॉन्ड माई बॉक्स. बट आई से इन क्लास आई विल नॉट यूज अ प्रोजेक्टर, आई विल यूज अ मार्कर. ये परमिटेड है क्योंकि ये मेरे बॉक्स के अंडर मेरा राइट है. बट चेंजिंग द इंटरनल असेसमेंट विल मीन गोइंग आउटसाइड माय बॉक्स, और वो उसको मैं नहीं कर सकता. Are you getting the point that I'm trying to give to you? That is what creates my box of responsibilities and my box of not just responsibilities, my box of rights and capabilities. अब आप एक एम्प्लॉय के पास जाएंगे,
समटाइम्स यू गो टू अ कॉल फ्रंटलाइन ऑफिस एंड से आपका प्रोडक्ट खराब है, अब आप क्रोमा गए फॉर एग्जांपल, आपको प्रोडक्ट एक्सचेंज करवाना है एंड यू हैव द बिल एंड एवरीथिंग, तो आप किसी भी स्टाफ को पकड़ के प्रोडक्ट पकड़ा लो, आपसे एक्सचेंज ले लेगा। बट यही अगर इफ देयर इज अ प्राइस डिफरेंशियल, then you go to the manager and only he or she has the authority to authorize those price differential exchanges. हर एम्प्लॉय नहीं कर सकता, ठीक है ना। सो वी आर क्लियर देयर, दैट्स हाउ यू वुड सी इट। यू वुड ऑल्सो सी इट इन द डिजाइन ऑफ द ऑफिस स्पेस। अगर एक हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन होगी ना, आपको हमेशा वहां पे एक रिसेप्शनिस्ट होगी और वो गाइड करेगी आपको किसके पास जाना है। शी बिकम्स द गेट कीपर। Are you getting the point? वो गेट कीपर है, जैसे आप इस बिल्डिंग में घुसे, उन्होंने आपको नीचे स्टाफ खड़ा होता नहीं, उस गेट से जाना है और उस वाली स्टेयर्स को लेके ऊपर जाना है। दे आर बीइंग द गेट कीपर एंड इन डूइंग दैट यू कैन फिगर आउट कि ऑर्गेनाइजेशन हायरार्किकल है। यूजुअली क्या होगा, आप जाएंगे और एक पोस्ट ऑफिस में दिखेगा, आपको भी ध्यान से देखना, बैंक में भी दिखेगा, जो पोस्ट ऑफिस का मैनेजर होता है ना, वो हमेशा वो 4 काउंटर के पीछे एक अलग टेबल पे बैठा होता है। वो दूर से दिख जाएगा कि वो मैनेजर है, ये हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन है। बट अगर आप किसी एमएनसी में जाते हैं, यू गो टू एन ऑफिस ऑफ से एक्सेंचर फॉर एग्जांपल, वहां पे सब लोग एक क्यूबिकल में बैठे हैं, बॉस भी वहीं बैठा है, इंप्लॉय भी उसी क्यूबिकल में बैठा है, सब वहीं। दैट इज इट इज गिविंग एन इंप्रेशन ऑफ अ डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। यू गो टू अ स्कूल, इन योर स्कूल डिड योर टीचर्स हैव इंडिविजुअल रूम्स? स्टाफ रूम ही था ना, सबके पास एक स्टाफ रूम ही होता है ना। उससे आपको पता लग जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन फ्लैट है। टीचर, हेड का रूम होता था, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा, या एक मिडिल स्कूल का होगा, जूनियर स्कूल की एक हेड होगी, 11 12 की एक हेड अलग से होगी, यू विल हैव डिफरेंट हेड्स, बट टीचर, हेड का रूम और एक प्रिंसिपल, खत्म। सो यू गेट टू नो दैट इज इट अ हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन और इज इट अ फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन? फ्लैटर। दिस इज हाउ यू सी। सो एज अ कस्टमर यू कैन मेक आउट कि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज और प्रिंसिपल्स क्या है। दिस इज जस्ट एन असाइड आई वांट यू टू सी, बिकॉज व्हेन यू आर इन द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन, द कस्टमर सीज इट। जितनी कॉम्प्लेक्स आप बनाएंगे उतनी कस्टमर सर्विस पे इंपैक्ट पड़ेगा, एंड दैट इज नॉट समथिंग दैट वी as an organization want my customer service to be impacted negatively. मैं हमेशा चाहता हूं my customer should be happy, so I have to design my setup in such a way that I am able to meet my ultimate goals. अब let's say Starbucks है। Starbucks का गोल क्या है? To give a good customer experience, ठीक है ना। सो उस एक्सपीरियंस के लिए क्या क्या करते हैं? They will have good training, they will train the employees to behave better, they will source the best quality coffee, they will have the best quality machines, their environment will be nice, the AC will be running, there will be nice music that will be playing, the seats would be soft, the tables would be clean, the ambience would be right. That is the ultimate goal, better customer experience. अब उसको कैसे अचीव करना है, you get to see from the design of the organization. Again, if you take McDonald's for example, अब McDonald's में जब आप जाते हैं, what is different between one McDonald's restaurant and another outlet? दोनों outlets में क्या फर्क होता है? Except for the location and layout of the organization, कितना बड़ा plot है, कितना कैसा रूम है, उसके अलावा कोई फूड में फर्क होता है? मेन्यू में, टेस्ट में, प्राइसिंग में, कस्टमर सर्विस क्वालिटी में नहीं होता ना। तो उनके केस में दे आर मोर कंट्रोलिंग इट। They can't have outlet A being different from outlet B. Better or worse की बात नहीं हो रही है इसमें। They cannot have it different because they want to give you their ultimate goal is to give you a standardized customer experience. And I cannot have that when every branch does whatever the hell they want. ये problem. So that is why I have to have control. Depends on the product, depends on the business, depends on the organization goals which I have. I will decide my operating structure accordingly. So let's say now, for example, I am a component manufacturer. I am Shriram Bearings. SRF Bearings शायद आपने सुना, ये उन्हीं का ब्रांड है। So there was this one company in Ghaziabad which is called Shriram Bearings. वो bearings बनाता है and it gives it to major two-wheeler manufacturers in the country. वो उनका business model है. So there is no customer interaction with them. So they don't need employee empowerment.
they don't need to have a nice office. Take for example, आप ऐसे करना try. You've been to Pizza Hut and Domino's, ठीक है ना? किसकी सीटिंग बेटर है? सीटिंग डोमिनोज में सीटिंग कहां से बेटर है? डोमिनोज में 4 कुर्सी होती हैं. किसका एम्बियंस बेटर है? पिज्जा हट का. और किसकी डिलीवरी फास्टर है? डोमिनोज की. Are you seeing the organizational change? ऐसे दिखता है आपको. That's how you get to see as customers कि organization कैसे behave कर रही है. How you connect, cooperate, goal. ठीक है ना? Right? Then इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसी से रिलेटेड आएगा. Again, organizational hierarchy is what is called chain of command. Who commands whom and who do I answer to? So let me take my example. Who is my reporting authority? My principal? Yeah, my head of department? Khatam? Right? But the dean of my organization, which is FASH, हमारा एक South Campus में हमारी organization है, FASH. Now, if the dean of FASH tells me some work to do, will I do it? He is my super boss. I should be doing his work. So, chain of command में principles ये आते हैं. The first question comes is, now, if I am an employee who is communicating with, अच्छा ये jammed है, okay. So, I am an employee and I have one boss. Is the chain of command clear? जो बॉस ने बोला मुझे मानना वो मेरा बॉस है, fine, accepted. But if I have two bosses, will there be a point where boss 1 says something which boss 2 does not want? Depending on his or her own needs, there will be a challenge. So as an employee, अब मेरी क्या गलती होगी? अब as a child, तो आप फादर की मानोगे कि मदर की मानोगे? अगर कोई आपको कुछ डिफरेंट कह रहे हैं तो then you get to choose. But can you make that choice in an organization? Maybe not. You may not have the freedom to make that choice. A family dynamic is obviously different from an organization dynamic, but this was the best example that I could give you. Two parents, two different directions. Kiski maan? So the employee gets confused. We don't want that. We want the employee to have clear knowledge of what his box is. कितना बड़ा है उसके अंदर क्या क्या resources हैं और उसकी क्या limits हैं. ठीक है? So we have chain of command. So we have to divide the work. We want all of this is all about achieving clarity, right? Okay. Then just a couple of more points and we'll end for the day because you're on time. Okay. Then comes this term called ये आपने सुना है टर्म कभी? क्रॉस फंक्शनल टीम्स. It's a modern management concept. It is, so when we talk of the hierarchy, so we have marketing, HR, manufacturing, operations. जो मैंने पहले आपको नींबूस का एग्जांपल दिया था. If, for example, hypothetically there was a team, there are 6 departments and you have one member from each department in that team. Will this problem arise? जो नींबूस वाली प्रॉब्लम थी, मार्केटिंग पहले चली गई, डिस्ट्रीब्यूशन पहुंची नहीं. What a cross-functional team tries to do is, it tries to reduce that issue. It tries to get people to work properly, right? And that's how the plan works. Okay, that's it. Last point before I end. Last point for today. Why should I listen to my boss? मेरे बॉस की अथॉरिटी कहां से आ रही है? Let me rephrase. Who is giving my boss the authority to tell me what to do? हाँ जी. So one is implicit. मैं मैनेजर हूं या मैं प्रिंसिपल हूं.
आपको मेरी सुननी है, वो एक implicit authority है, वो आपसे सीनियर है तो आपको उनकी सुननी है, that's implicit. Then there are people who become managers and you like them to be, आप उनको फॉलो करना चाहते हो. Say for example, let me take a very basic off-field example. एक इंस्टाग्राम का इन्फ्लुएंसर है, आप उसको क्यों फॉलो करते हो? क्योंकि आपको अच्छा लगता है. सो he or she has earned the right to tell you what to do. Another is cultural. So we say, let's say for example in India, we are trained to, from day one, we are trained as children also, हमें अपने बड़ों की बात माननी है. Sometimes that doesn't gel with what we want, but we end up listening क्योंकि एक उनके पास implicit authority है seniority की, और एक उनके पास cultural authority है. Whereas in the US, for example, children or employees are not taught to fear the boss. We are taught to fear the boss. Boss ने जो बोला आपको मानना है, खत्म बात. Boss से पहले आप घर चले गए तो गड़बड़ हो जाएगी. That's a cultural dimension. Whereas in the US, for example, मेरा काम हो गया, मेरे 8 घंटे हो गए, मेरे 5:30 बज गए, आपको बैठना है बैठो, मैं जा रहा हूं घर. दोनों ऑप्शंस पॉसिबल. So this is where the cultural element also with authority and power comes in. So we'll stop here. फिर हम अब next पे हम empowerment की बात करेंगे and then we'll